वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तो मैं कोई खाना तो नहीं बना रही हूँ। एक्चुअली सुबह सुबह मैं निकल गई हूँ एक रोड ट्रिप पे, जो मतलब सोचा कहीं गए नहीं थे लॉकडाउन से, तो सोचा एक रोड ट्रिप में ही चलते हैं। कोलकाता से मैं अभी भुवनेश्वर जा रही हूँ, तो अभी बजाए सुबह के 6:30 बजे। तो सुबह सुबह मैं निकल गई हूँ, आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो भी कुछ आएगा मेरे साथ सामने। मैं बता देती हूँ, मेरा भुवनेश्वर में मेरा घर है, मम्मी पापा रहते हैं उधर, तो उन लोग से भी मिलना हो जाएगा और उसके बाद हम लोग का एक रोड ट्रिप भी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ उधर। बस एक ही दिन का बात है, फिर वापस आ जाऊँगी। यहाँ पे रुके हैं अभी रास्ते में चाय पीने के लिए। ये मेरे हस्बैंड खड़े हैं। चेंज हो गया, सोचा थोड़ा लस्सी मंगवा देते हैं, चाय नहीं पियेंगे, बहुत मन भी नहीं कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा लस्सी मंगवा दिया। हस्बैंड कुछ कैंडीज खरीद ले रहे हैं रास्ते में खाने के लिए, बिकॉज अभी और रास्ते में कुछ खाना तो नहीं है, बस अभी डायरेक्ट घर पहुंच के लंच करना है। अगर आप कभी आज़ाद हिंद आएंगे ना इधर, आप लस्सी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज़ाद हिंद का बढ़िया लस्सी होता है इधर का। आज का वेदर बहुत ही अच्छा है, एकदम धूप ही नहीं है, सुबह से ऐसे ही क्लाउडी वेदर है और बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे जाने में। और जब भी आप रोड ट्रिप करने का मन करे ना, आप बस निकल जाइएगा और कुछ सोचिएगा मत उतना। कोलकाता से भुवनेश्वर का रोड बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा जाने में ऐसे रोड में। अब देखिए 5 hours 48 minutes लेफ्ट, 359 किलोमीटर्स और भी जाना है, लंबा सफ़र है, बाकी है अभी भी और। लेकिन रोड इतना अच्छा है ना, तो टाइम का उतना पता भी नहीं चल रहा है और एकदम क्लाउडी वेदर है। ऐसे तो भुवनेश्वर में बहुत बार गई हूँ गाड़ी लेके, और यहाँ पे टोल गेट्स मिनिमम 6 to 7 टोल गेट्स तो आएगा ही आएगा।
लोग अभी ऑलरेडी उड़ीसा में घुस चुके हैं, उड़ीसा बॉर्डर में ही है, चलेश्वर में। तो आपको मैं दिखाती हूँ। आई एम एक्चुअली सुपर एक्साइटेड। मैं घर जा रही हूँ, इतना दिन से गई नहीं हूँ लॉकडाउन के बाद से। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? यहाँ पे कोई भी टोल नहीं है, आराम से निकल गए। Ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go is the जिन लोगों को पता नहीं कि उड़ीसा में क्या फेमस है, मैं बता देती हूँ। उड़ीसा में इट्स नोन फॉर इट्स सिटी ऑफ टेम्पल्स। वहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पल्स मिलेगा देखने के लिए। और आपको ये भी पता हो कि वहाँ पे पुरी भी है, जो जगन्नाथ टेम्पल फेमस है वहाँ पुरी उड़ीसा में। और लोग वहाँ हर साल आते हैं रथ यात्रा के लिए। इट्स अ ग्रैंड फेस्टिवल जो कि हर साल होता है, और इस साल भी हुआ था, लेकिन बहुत सारे प्रिकॉशंस लेके ही हुआ था कोविड के लिए। back on the shore, one foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. These hopes dance high like sparks before they go out. But in that second, you're still mine. Diving in to all this endless space, falling stars, but still. मैं अभी कटक में हूँ, कटक पहुँच गई हूँ, और ये महानदी रिवर है। इसके नीचे बहुत पानी है, और उस तरफ जो राइट हैंड साइड में देख रहे हैं वो है ट्रेन लाइन, जहाँ से ट्रेन आना जाना करता है। इसके नीचे एक्चुअली बहुत पानी है। चलिए मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ, आपको शायद दिखाई नहीं देगा ऐसे। ये देखिए मैप में, इसके नीचे पूरा पानी है। देखिए 28 किलोमीटर्स और रिमेनिंग। कटक के बाद ही जस्ट भुवनेश्वर है, पहुँच जाऊँगी मैं। फाइनली मैं भुवनेश्वर पहुंच गई हूँ, और मैंने मास्क भी पहन लिया है। एंड यहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश भी हो रही है। बस और 5-7 मिनट में मैं घर भी पहुंच जाऊँगी। गाइस, भुवनेश्वर आने का मेरा एक रीज़न भी है, जो कि मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, सो स्टे ट्यून्ड, और होप यू लाइक्ड माई रोड ट्रिप वीडियो। सो लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।